पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड सेलेब्स लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग रहने और अपनी तरफ से प्रकृति को साफ रखने का संदेश दे रही है। सेलेब्स लोगों को क्लाइमेट वॉरियर बनकर उसकी रक्षा करने को कह रहे हैं। इस मुहिम में अर्जुन कपूर, आयुष्मान खुराना, संजय दत्त से लेकर कई बड़े स्टार्स शामिल है। अक्षय कुमार ने भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को सेफ रखने का मैसेज दिया। और भी सेलेब्स ने मैसेज देते हुए पोस्ट शेयर किए हैं। आइए डालते हैं उन पोस्ट पर एक नजर। बरसाने लग गए भाई, बरसाने लग गए, देख ले मेरी जाने जिगर, जो बोएगा वो ही पाएगा, वही खाएगा, वही सूंघेगा। और ये देखो मेरी जान, मेरे बच्चे देखो, इसके ये बिये, ये सारे बिये हुए इसको जमा करने का। अंदर वो छोटे छोटे काले दिख रहे हैं ना, छोटे बच्चे टिल्लर, ये बिये है ये सब। और इन बियों को अगर इसे डाल दिए जमीन में तो इसका गेम बच जाता है बाबा। और ये मोटी दिए और घस दिए चेहरे पे तो चिकना बन जाता है। My one wish for Earth is pretty simple actually, something that needs to be actioned right away. I wish all human beings are extremely careful while disposing of the mask and gloves or even PPEs. We are using millions or probably billions of these things in this pandemic, and अगर हमें again irresponsible littering करना शुरू कर दिया, then these can prove to be extremely harmful. इनफैक्ट अगर ये हमें वायरस से बचा रहा है तो ये भी हो सकता है कि इन पे वायरस लगाओ, इसलिए यहाँ वहाँ ना फेंके। प्लीज बी अ लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल एवरीवन, वरना भूमि हमसे बदला लेगी। भूमि पेड़ ने कर नहीं, भूमि अर्थ। वन विश फॉर अर्थ। Hey guys, so it's World Environment Day soon and I was asked what can I wish for this World Environment Day, और एक ही चीज मेरे दिमाग में, let's reduce the use of plastic. On a day-to-day basis at least, हम सब तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं. We've already caused a lot of harm unknowingly and in some cases knowingly. We've seen our marine life suffer, and the fear and anxiety of our future generation suffering, knowing that only 9% can be recycled of the plastic that is there in this world. So baki 91% might never be recycled and it might just remain. I feel now is the time for change. Now is the time to be a climate warrior, and that small change for me started when I moved on from plastic bottles and started using metal bottles. मुझे पता है बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी शुरुआत थी। So yeah, I believe small changes matter, and I'm a climate warrior. Are you? These are exceptional times that we've seen in the last few months. It is time to wake up. It is time to take notice. It is time to participate. This Environment Day, my one wish for the earth is, or rather a request for all of us, use water wisely. It is a scarce resource, and right now we are even more dependent on it to wash our hands at regular intervals to battle this pandemic. However, in the endeavor to keep ourselves safe, we should not forget about the bigger goal. We need to use water wisely and conservatively so that our future generations have enough and more. It's my humble request to all of you to become climate warriors and work towards a clean and a green future. Thank you. Hi guys, I'm Ananya Pandey. If I had one wish for Earth, it would be to save endangered species, which are on the verge of extinction. Our planet is blessed to have so many diverse species and forms of life. Unfortunately, as a result of human race's unending exploitation, some of the most beautiful species of animals have already gotten extinct or are on the verge of extinction. Why? Because we have threatened their habitat. Planet Earth is as much theirs as it is ours. Deforestation, pollution, overpopulation, and animal cruelty are a few of the major reasons for it. We must all learn to coexist and be sensitive with our actions towards them. As we all grew up, we were all taught lessons of coexistence, kindness, and compassion in school. But putting it into execution is in our hands. So let's not forget about our fellow creatures whom we share our home with and make our planet a better place for them to live on. I'm a climate warrior.